Hit me with the harshest reality truth. You are not likely to get rich if you are big on morality. Every rich person on this planet, fucking Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, you think they followed morality? You think they always had their morals straight? No, bro. They figured in life कि भाई ये सब दूसरों का सुनने से, ये सब करने से मेरा कुछ नहीं होगा life में. In the end, I need to stand up for myself. In the end, I need to do the things which will make me rich. Correct. And in the end, it worked out for them. And after being rich, you follow these morals and principles, whatever you have, right? Hit me with the harshest reality truth. Only hoes have hoe face. I'm just smiling. I am not saying anything. Yes, just smiling. Hello, welcome back. Yet another episode of Impostors. Let's go. Today we have a new segment which is called Hit Me with the Harshest Truth of Reality. Shubham and his intentions of going deep. A lot. Deep तो हम जाते ही हैं. इस बार इस कैमरा के सामने deep जाएंगे. Well. Okay, let's begin. First one. Sometimes suffering is just suffering. It doesn't make you stronger. It doesn't build character. It only hurts. Somewhat agree to it. So in one aspect, it says that it doesn't build character. While it does in a lot of cases, but I do agree that in some cases it doesn't. Yeah. So that's because, like, you know, in many events, you're just sitting and thinking कि इसका क्या implication होगा life में. Yeah. I'm not sure कि whether, like, you know, it will build some character development or it will cause any changes in my personality. Yeah. So I do agree in that. But I disagree with the part that it doesn't make you stronger, wala. Because I feel कि you know, any kind of hardship, sacrifices, any adverse circumstances. Yeah. Like if they are bad and if they are stressful or like, you know, very like if it's the lowest phase of your life, it does make you stronger in some way or the other. Because just like a scenario wherein example that like you have been through some harshest days and let's say that your peer group hasn't. Yeah. Right. And then उसके बाद आपके कोई peer group में से है ना किसी का like you know कुछ खराब दिन आया, but it seems like you know less worse than what you've been through. Yeah, it just seems like a normal day for you. Yeah, and you'll be like ठीक है ये तो होता है. I mean, yeah, but then you have to step in their shoes and नहीं होता है ठीक है, but you know कि you've seen much worse. Exactly. And you know that's why you're so calm and relaxed in that moment because you know how to just like you know navigate through that. Yeah. And example समझ लो कि आपके लाइफ में फिर एक और फिर खराब इवेंट आया जो किसी और को लग रहा है कि अरे ये तो फिर बहुत बेचारा हो गया ये वो. But you have seen much worse. Yeah. And that's why like you become a bit stronger and you know a bit nonchalant in a way. Yeah. Where you know कि ठीक है this too shall pass. Yeah. And you know फिर better days will come eventually. Yeah. And you do know कि मतलब I have seen the worst, तो अभी इससे बुरा और क्या ही हो सकता है. I think I'm the perfect person to answer this question, being a United fan. Suffering is suffering, bro. It doesn't do shit. It doesn't build character. But yeah, bro, it's like if you suffer, if you're constantly suffering, then it doesn't build character. But if you know this too shall pass, like you just said, and if you know this is just going to make me a better person, make me a stronger person, then suffering helps. And like definition of suffering is different for different people, like you just mentioned. For me, like biting a mosquito might be suffering, but for the other person, like getting Snake food to eat, getting food to eat, that is what is suffering. So it's like different level of privileges. It's like different things which make you suffer. Correct. In the end, it's all about how you take it and how you deal with it, and how you get over it. In the end, you need to realize that कि ठीक है जो भी हो रहा है this too shall pass. ऐसा नहीं है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये खत्म होने वाला है. अब वो कब खत्म करना है, कैसे खत्म होना है, हमारे कंट्रोल में भी है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में भी नहीं है. Absolutely. So in the end, you control the controllables and fuck the uncontrollables. And in case of character development, I do believe also that कि if in a scenario where you're at fault or like you know for whatever happened, you know for whatever shit happened, it was you know for majorly like you like you know due to your actions, your behavior and things like that. So you do know that you know that you're the person who is at fault. Correct. And it's your wrongdoings, your thought process, your approach and you know for mentality and things like that. Yeah. So and
like when you realize that and you've seen the suffering that has been caused because of all your actions and wrongdoings, then that builds an arc of for character development. Yeah. क्योंकि तब आपको समझता है कि मेरी ही सब गलती है, कि फिर मैंने ऐसा सोचा, मैंने वैसा किया, और फिर और अब मेरे वजह से मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, मेरा फैमिली भी सफ़र कर रहा है, या मेरे दोस्त सफ़र कर रहे हैं, वॉट एवर, and with then you take the onus on yourself, but for that you have to be sensible and responsible enough to at least understand the gravity of the situation, कि ये मेरे वजह से हुआ है, तो फिर तभी थोड़ा build होता है character development वाला part, but not in all cases. Yeah, ये सब के लिए like you should have control over your mind, because 90% of the times the things happen over here and they don't actually happen in real life. The things that we are worrying about, they might not happen in real life, क्योंकि हम overthinking इतना करने लग गए कि भाई ये we always, our mind always is used to go thinking of the worst case scenario. Correct. कि fuck bro, ये कल मेरा presentation I'm going to fuck up, but 90% of the time it's not going to happen. So again, like to treat this like you need to have control over the mind, you need to fucking meditate every day and you can't just slack off. Correct. So when you know like you're constantly suffering, then you need to take the right steps. You can't be like, oh bro, I'm suffering, I'm just used to it, I'm a weak person. No bro, everyone can get out of it, but yeah, you need to work hard. जो भी तुमने बोला उसका इफेक्ट give you just an opposite perspective of it, कि उसका उल्टा ही वे जो आदमी को ये ना बहुत बहुत ही नेगेटिव वे में करता है अफेक्ट इज द फैक्ट लाइक यू मेंशन कि यू सेड कि तुम यहाँ से खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो, या यू फिर अपना फिर ओवर थिंकिंग इन अ वेरी बैड वे, बट from here, if you're highly confident and if you're very positive, but you're not taking the right steps, मतलब कि तुम कुछ actionable नहीं कर रहे हो, there's no for on ground work happening, and you're just कि ऐसा नहीं मैं तो कर दूंगा, मतलब अच्छी बात है, like it started here, and you're ambitious, है ना, फिर but you're not taking action, है ना, you're not working towards it, so even that is very bad, because 100%, I think that you also must have read the quote that there is no unhappier person in the world than a person who is ambitious but also is lazy. Yeah, that is the reason why I'll always be a hardworking person than a talented person, because I always consider myself, I'm not that talented bro, I'm not. There are 1,000 people around me who are 10 times talented, who know they're born talented. I'm not. But one thing I can say, even you can say, is we can outwork people. We believe in hard work. Both of us know कि नहीं भाई हम नहीं है talent, but we'll figure shit out, कि हमें पता है ठीक है जानना है कुछ करना है. So I would always be a hardworking person than a talented person. Correct. For sure. Yeah, and I think hard work coupled with the right mentality, and surrounding yourself with the right network, I think then you'll go places. Unbeatable. Yeah. The world values people who get results over nice people. Bro, this is genuinely very true. It took me a while to realize this in life. Yes. And I came to the realization that you can't be nice. Of course, that doesn't mean you be rude to everyone around you. Yeah. But in the end, you need to think about yourself. You need to think about your goals. And if you're just being nice around people, if you're being nice to everyone, if you're considering thinking about the nice things always, and you're not taking the right steps and your work is getting affected, then you're never going to be successful. In the end, people always say that nice people finish last, and some of the people are bro, what do you say? You have to be nice in life. You have to be nice in certain situations. For example, if you're in a relationship, then be nice. If you're dating someone, if you're with your friends, be nice. Nobody's asking you to be rude. But when it comes to actually getting shit done, when it comes to work, when it comes to businesses, you have to do what's right. You should be okay with people not liking you. कि भाई मेरा बॉस टॉक्सिक है, जब सब पता नहीं क्या क्या चीज़ें करता है, फायर कर लेता है, पैसे कम कर लेता है. Again, there are ways to do it. You don't make people suffer, but if you know it's the right decision, if you know it's going to help your business, and it's not going to you're not doing it to put someone down, then it's the right thing. And yeah bro, there are so many examples of nice people not finishing above, not actually making it in life. There are so many examples. You can be nice when you have made it in life. Ki theek hai, I have all the money in the world, now I'm going to be nice, now I'm going to give it back. But when you're actually struggling, when you need to take those hard decisions, correct, you need to show that personality and character. You have to make it happen, and you don't have to think about being nice. Correct. And for absolutely, as the opinion said, that the world values people who get results over nice people. Yeah. So for obviously from the world point of view, yeah, अभी दुनिया पूरी मतलब की है. Yeah. So if someone has money, has influence, is famous, etc., all those things,
So people think that that if I be in the right if I be in close circles with this particular person, then I'll get a lot of things in life. I'll get more Yeah. opportunities. Yeah. And फिर people indirectly confuse it with okay, with like ये सही बंदा है. Like example, so as you know, we don't know the entire story. Yeah. But let's say that our for Indian cricket players, है ना, अभी like there are a couple of like जो भी सब चल रहे हैं, डिवोर्सेस चल रहे हैं अभी लोगों के. आई नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन कि क्या ट्रूथ है, क्योंकि हमको भी नहीं मालूम. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इन द माइंड ऑफ कैजुअल्स पीपल आर लाइक कि ये देश के लिए खेलता है, ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है ना, मैच विनर है, अच्छा बंदा है, तो यही अच्छा होगा और यही सही होगा. अभी हमको नहीं पता कि ट्रूथ क्या है, बट तो लाइक देख रहा है लोग का कि क्या परसेप्शन है कि like absolutely those people are match winners. They have performed like time and again for the country and for their franchise as well. But खाली वो देख के और बस ऐसा बस जज कर देना कि ये आदमी ही सही है, एकदम मस्त बंदा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप उसके रिजल्ट्स को, है ना, जो उसने फिर परफॉर्मेंस दिया है, आप उसको डायरेक्टली लिंक करो विद हिज कैरेक्टर, विद हिज पर्सनालिटी. इट्स लाइक टू सेपरेट थिंग्स. लाइक यू as a professional, है ना, like for in your field of work, and you as a person, your personality, behavior, and all those things. A very tough one here. Hit me with the harshest reality truth. Only hoes have hoe face. Are you smiling? I am not saying anything. You're just smiling. I'm just looking at you, bro. I'm smiling. You are looking very good today. Thank you. देख, मैं तेरे को ये बस एक सवाल पूछूंगा. डू यू वांट टू गेट कैंसल्ड? नहीं. बट आई वांट तो लेट्स अवॉइड दिस, आई वुड से, बिकॉज I think people are not very generous on the internet in terms of all these things. We'll all take one statement for us to go viral and get fucked also. मतलब इससे नाम भी बन सकता है, बट इससे कुछ खराब नाम बनेगा, मतलब ज़्यादा बनेगा तो. Hit me with the harshest reality truth. One sad truth about life is that you may not even be part of the future you're stressing about. Yeah, bro, this is so deep when you actually think about it. Like we always think कि भाई कल क्या करना है, परसों क्या करना है, इतने सारे चीजें चल रहे हैं, but all it take is like 1 second for you to just fuck off from here. Thank you so much, peace. वो फिर पीस के वजह it will be rest in. खत्म. But it actually is such a nice thing to like have. It's such a nice perspective to have कि भाई you shouldn't stress about life so much. You shouldn't worry about things so much. In the end, it's all going to be irrelevant. One day you're just going to go away from here and all these things are not going to matter. So लोग genuinely बोलते हैं ना कि भाई you should be happy even when the situation is not going your way, and it's not human to always be happy. But you should at least try to be happy always, because in the end when you're lying on your deathbed, all you're going to think about is the things that you missed out on. Missed out on, or the things that made you happy. That's all what matters. It's not, you're not going to think about going to a job every day. 9 to 5. मैं अपने बेटे का बर्थडे मिस करके जॉब गया था भाई. वो दिन पे काम किया. I felt really bad, but I had to do it. But when you're dying, you won't give 2 fucks about that job. You'll be like, भाई, I missed spending a day with my own child. So in the end, you should realize कि भाई life is a very beautiful thing and it's very short. हम ऐसे बोलते हैं ना कि भाई weekend ऐसे चले जाते हैं, weekday भी आजकल ऐसे जा रहे हैं क्योंकि we are always so busy. We are what, 24, 25 now. This year we'll turn 25. I don't know about 24 also, bitch. But this year also we are going to turn 25. We have we started this 1.5 years ago almost. It ऐसे गया bro, time ऐसे गया, पता भी नहीं चला. And in our next few months you don't know what's going to happen. We'll achieve a certain number of goals, और तब realize भी नहीं हुआ कि भाई इतना सब कर रहे हैं. So it's like bro, life is a very beautiful thing to have happened to us, and it's just like what we live for 70, 80, 40 years. You never know, nobody can predict it. So in the end, you should be happy. You should do what makes you happy. So भाई पेपर डाल दो सबके सब आज. ऐसा imagine Nikhil passing away 2 days later, and then this was the last motto जो ये बोल के गया है, and we like बैंचोद किससे मारो देखो. ये आदमी था, इतना सही ज्ञान दे के गया मरने से पहले. But and so I do agree a lot with the fact कि इतना stress तो करना ही नहीं चाहिए, because you don't know फिर what your last day is like. And but in terms of planning, in terms of for thinking about your your future from a
लाइक गोल ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव, तो उसके हिसाब से तो अपना नॉर्मल करते रहो, है ना, क्योंकि उसमें यू नीड द प्लानिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. बट इफ यू जस्ट कॉन्शियसली लाइक जस्ट स्ट्रेसिंग अबाउट कि अरे अभी एग्जाम है, फिर ये है, फिर उसके बाद हुआ, फिर उस दिन मतलब कि जो भी है बस चल रहा है पूरा टाइम स्ट्रेस में है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बिल पेमेंट आ रहा है, उसका वो आ रहा है. तो अभी वो तो आएगा ही, वो तो हर एक को पता है, वो मतलब कि वो ऐसा नहीं कि वो एकदम लाइक आउट ऑफ द ब्लू आ रहा है. अभी कुछ आउट ऑफ द ब्लू आ जाए तो वो थोड़ा स्ट्रेस करने लायक है कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो है ना मेरे को कुछ पता ही नहीं था. अब मेरे को पता है कि 10 दिन बाद मेरा बिल पेमेंट आने वाला है, वो मेरे को पहले से पता है, वो मेरे को महीने भर से पहले से पता है क्योंकि मैंने खर्चा किया है. तो वो मेरे को 10 दिन बाद आ रहा है, दिखा रहा है कि आपका बिल ड्यू है ना. तो अंडरस्टैंड करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लोग पहले काम भी वही करते हैं, उसके बाद भी स्ट्रेस भी करते हैं. तो वो मतलब कि अगेन कि इफ योर इन एक्शन लीड्स टू समथिंग दैट ट्रिगर्स लाइक अ स्ट्रेसफुल थिंग इन योर हेड, सो इट्स योर फॉल्ट. एग्जैक्टली. जैसे हमारा ये ओपिनियन था, ट्वीट था, तो ऐसे इफ यू सी ऑल द टॉप एथलीट्स, रोनाल्डो, विराट कोहली, दे ऑलवेज से दैट फोकस at what's happening right now. Live in the present rather than worrying about the past or worrying about the future. Correct. And this is the most important thing to do, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चला था कि कल ब्रो कुछ फकअप हो गया, कि कल ब्रो बहुत बड़ा मीटिंग है, मैं कैसे करूँगा. बट ऐसे बोलते हैं ना कि तुम ब्रश कर रहे हो, बट तुम्हारे दिमाग में ब्रश करते हुए नहीं दिख रहा है, तुम्हारे दिमाग में पूरा दिन चल रहा है कि मेरे को ये करना है. बट लिविंग इन द मोमेंट, लाइक एक्चुअली एक्सपीरियंस द मोमेंट, इट इज सो इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट गिव्स यू पीस, बिकॉज यू आर नॉट वरिंग अबाउट एनीथिंग. अभी मैं जो कर रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं माइक के सामने बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग इधर ही है, मैं और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा. सो एवरी एथलीट, एवरी पर्सन हु हैज मेड इट इन लाइफ सेज द सेम थिंग कि ब्रो यू शुड लिव इन द मोमेंट, यू शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट, एंड दैट इज व्हाट विल गिव यू पीस, दैट इज व्हाट विल स्टॉप worrying about future, and that's what life is all about. Correct. And that's what I think for meditation also teaches you. Yeah. उसका main purpose ही ये to फिर give you peace, and the main thing कि तुम वो particular फिर moment में कैसे रहो. Yeah. है ना, फिर कैसे just be still and not think about anything else. Yeah. कि mind में कुछ thoughts ही नहीं है, है ना, your mind is just blank. Yeah. And you're just enjoying the peace and the that shanti जो एकदम. Yeah. A lot of people in this world have a different level of stress which we don't even know about. Yeah, absolutely. So it's like we are happy with the stress we have. Yeah. कि भाई we are very बोलते हैं ना privileged in a way कि ठीक है हमारा स्ट्रेस दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ कि भाई fuck मेरे को ये स्ट्रेस चाहिए, लोग बोलते रहेंगे. दूसरों के लिए तो बहुत जैसे 2 दिन में 2 बार खाना is also stress कि कहाँ से अरेंज करे. फिर उसका अभी वो ध्रुव राठी का एक नया वीडियो आया था, मैं देख रहा था कल ही. उसमें he was like talking about the entire beggar system in India. कि फिर कैसे सब माफियाज एंड मतलब जो भी होता है सब कंट्रोल करता ही है, लाइक फिर बड़ा नेटवर्क. एंड उसमें एक एक्चुअली स्टोरी था फ्रॉम समवन फ्रॉम कानपुर, लखनऊ, आई डोंट नो, फ्रॉम सम सिटी. वो यहाँ पर आया था कहीं पर तो जॉब के लिए. यहाँ पर उसको किसी ने फिर कर लिया, किडनैप कर लिया, उसको उठाया, उसके सब हाथ पाँव तोड़ दिए, सो दैट वैसा देख के लगे कि हाँ ये भी फिर भीख मांगने लायक है ना, लोगों को इसको देख के दया आएगी. उसके बाद उसका फिर यहाँ से ये सब निकाल दिया, दांत तोड़ दिए, to make it फिर more फिर believable. and उसको फिर maximum दिन का they used to give him just फिर 1 or 2 रोटीज ताकि और पतला हो जाए ये वो etc. Actually looks like हाँ, तो एक्चुअली so if you also, तो उसके बारे में आई थिंक एक्चुअली एक वो था न्यूज़ कवरेज था where they have shown the actual person. मतलब कि लाइक फिर जिसके साथ सब हुआ उसकी 1-2 आग वाग भी फोड़ दी, पता नहीं क्या क्या किया. फिर उसको फिर यहाँ से वहाँ पर फेंक दिया, उसको एक रूम में बंद कर दिया फॉर सम टाइम. फिर वो फिर कैसे करके वो अपने फिर घर पहुँचा बाद में. एंड हिज पेरेंट्स वर शॉक टू सी कि इसको क्या हो गया, ये तो काम के लिए निकला था, अब इसको क्या हो गया. हाँ, एंड मतलब कि उसे फिर बात करने को नहीं हो रहा, मतलब उसका वो पूरा आँख सूज गई है यहाँ से, एकदम पतला हो गया, पहले कैसे निकला था, मतलब एंड यू फील कि उसमें वो तो बेचारा एकदम अच्छे इंटेंशन से काम ढूंढने निकला था, है ना, फैमिली से दूर रह के, एंड देन ऑल दीज थिंग्स हैपन. सो फिर वो तो अनफॉर्चुनेटली आई बिलीव कि पूरा नम हो गया रहेगा अभी, कि वो स्टेज पे कि अभी मेरे को है ना वो ऐसा आता है ना कि अभी आपको कुछ लाइक अफेक्ट ही नहीं करता, वैसे हो जाते हो, एकदम नम हो जाते हो. बट उसके साथ फैमिली वालों को फिर कैसा लगता होगा, मतलब दैट इज स्ट्रेस, दैट इज लाइक प्रेशर. बंदे को बॉलीवुड में होना चाहिए भाई, एक ही दिन में कैरेक्टर में आ गया. ओके नेक्स्ट. एंड लोग मेरे पे पहले ब्लेम डाल रहे थे कि मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता. Hit me with the harshest reality truth. You are not likely to get rich if you are big on morality. I think lately I've realized that this is very true.
there are a lot of 100%. people that have become rich on the basis of very strong moralities, but Yeah. I believe कि if you see as a percentage or as a proportion, it is very very less. Very less. Like very less. Example, if like there might be 100 millionaires, उसमें से गिन के 5 ही होंगे जो लोग इसको फिर फॉलो करके आगे बढ़े रहेंगे वगैरह. बाकी आई बिलीव कि सब ने लाइफ में कुछ ना कुछ झोल झाल किया ही है, स्कैम वैम किया ही है. Yeah. सबके पास काला पैसा भर भर के पड़ा है. Yeah. सबने यहाँ का वहाँ किया, टैक्स इवेजन किया है. मतलब कि ये तो बहुत नॉर्मल है. एंड आई थिंक दिस इज एन एक्टिव डिस्कशन ऑन एनीवन आई थिंक हु इज फिर 23, 24, 25 जहाँ पर सबको रियलाइज हो गया है कि ये 9 to 5 जॉब से या एकदम फिर साधु संत कि यहाँ अच्छे से रहो, अच्छे से ऐसे नहीं होने वाला. थोड़ा ऐसे सब बात करते पता है, ऐसा सब लिटरली कि भाई कुछ स्कैम वैम तो करना पड़ेगा लाइफ में वरना पैसे नहीं आएंगे. Exactly, bro. वो morality should come in picture once you are actually rich. Like while becoming rich, morality should be your last concern. Like कि ठीक है मेरे को like having values and principles is a different thing. But doing everything right in terms of कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को 9 to 5 ये करना है, मैं और कुछ नहीं, एकदम बोलते हैं ना प्रॉपर बुक से फॉलो करो, that is not going to help you in any way. In the end you need to do something. I'm not saying fucking rob a bank. So I was saying कि there's a difference between ethics and like for between like illegal things. So don't do illegal things, but it's not necessary to be ethical. Exactly. You need to find a way कि भाई मेरे को कुछ करना है जिंदगी में और मेरे को पता है कि मैं ये सब चीज़ों से नहीं होने वाला हूँ. सो आई हैव टू पुश माई सेल्फ टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो. एंड यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी कि भाई माई बॉस इज हैप्पी बिकॉज आई एम लाइक ऑलवेज वर्किंग 12 hours a day. No bro, you work 9 hours a day, you do 3 hours of freelance. That'll give you more money. That is the right way to go about it. And it's you in the end, bro. Every rich person on this planet, fucking Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, you think they followed morality? You think they always had their morals straight? No, bro. They figured in life कि भाई ये सब दूसरों का सुनने से, ये सब करने से मेरा कुछ नहीं होगा लाइफ में. In the end, I need to stand up for myself. In the end, I need to do the things which will make me rich. Correct. And in the end, it worked out for them. And after being rich, you follow these morals and principles, whatever you have, right? तो नहीं होगा भाई ये जितना जल्दी रियलाइज हो ना तुम्हें जिंदगी में उतना जल्दी तुम सक्सेसफुल बनेंगे. मतलब एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन यू. मतलब अगर तुमको ऐसा है कि मैं अगर फिर इमोरल होके मैं अगर लाइक पैसा वाला बन भी जाता हूँ, बट आई विल नॉट लाइक दैट, सो इट्स फेयर. आई थिंक इट्स कूल 100%, है ना. बट मतलब कि अगर तुम्हारा लाइफ में ऐसा एकदम इंटेंशन ही है कि मेरे को पैसे वाला बनना ही है, तो आई थिंक दैट तुम थोड़ा और दुनियादारी से थोड़े और हो जाओ, वाकिफ हो जाओ. एंड देन तुमको समझेगा कि एक्चुअली लाइक फिर हाउ एवरीथिंग वर्क्स. अभी तुमको कुछ भी गवर्नमेंट ऑफिस से काम है, like everyone knows कि वहाँ पर काम फास्ट कैसे होना है. Exactly. But if you're not ready to do that, then it's your wish. उसमें कुछ खराबी नहीं है, but you'll have to wait for like 2 weeks, 3 weeks, 1 month. And अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर वो सेम काम अगर फिर एक दिन में करा के आ रहा है, तो उसके पास ऑप्शन था, उसने किया. इन दी एंड लाइफ इज अ रेस ब्रो. लाइक यू इधर फकिंग बोलते हैं जैसे तूने बेस्ट एग्जांपल दिया है कि ब्रो ऐसे पुलिस वाले से ऐसे मेरे को लाइसेंस बनाना है, मैं 1000 रुपये देके करा लूँ, मेरा काम हो रहा है. या तो मैं एकदम बाय द बुक्स की नहीं, मैं 2-3 महीने बाद करूँगा, ये करूँगा. इन दी एंड द पर्सन हु वांट्स टू गेट इट डन विल गेट इट डन. एंड यू आर जस्ट बीइंग ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड दैट यू आर नाइस कि ओ मैंने ये सब किया है, मैं तो बुक से गया हूँ, तुम चोर हो. नहीं ब्रो, दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स राइट नाउ. यू नीड टू गेट शिट डन. You need to get shit done before anyone else gets it done. Because it's all about competition. It's all about the fast-paced environment we are living in. So you need to find ways to get things done. Again, not the wrong ways, but if there's an option to do it in the right way without harming anyone, go for it, man. Hit me with the harshest reality truth. Mastering the art of detachment is the only way you'll be successful in life. I should get this tattooed somewhere, bro. I said detachment is the key, bhai. Absolutely. If you are fucking attached to everything that's happening in your life, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा बॉस मेरे पे चिल्ला रहा है और मेरा मूड खराब हो गया. आई वोक अप इन द मॉर्निंग, माई गर्लफ्रेंड येल्ड एट मी, मेरा मूड खराब हो गया. इन द एंड योर इमोशन शुड बी इन योर हैंड. यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ यू फील. सो डिटैचमेंट इज द वे टू गो, ब्रो. इट्स वेरी इजी टू से. हम दोनों को पता है कि डिटैचमेंट इज द थिंग टू डू, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट. बट एटलीस्ट वी नो व्हाट्स द राइट थिंग टू डू. Being detached will help you to like cut all the bullshit out. Your mood shouldn't be dependent on a particular situation or a particular person. Tabhi you will achieve peace in life. That is what like life is all about, yaar. अभी जैसे कि like if we say it in very simple terms, being detached is being not too attached with anything, or any person, or any kind of emotion. That's a very very difficult thing to do, but I think that anyone that masters it is actually I don't know if I would categorize that person as happy,
Yeah. और यहाँ पर क्या लिखा है, is the key to success. Success. Yeah. So see, again, success, there's like two ways, either in Yeah. terms of your happiness or peace, and second in terms of money. Yeah. Like from a materialistic point of view Yeah. and all those things. Yeah. From a materialistic point of view, I don't know ki whether it leads to success or not. Yeah. But from like mentality point of view, spiritual point of view, and all those things, I think it's absolutely the key to success, because it just lowers your expectations. Yeah. And you are not dependent on anybody else's actions. Yeah. And you are not driven by their actions. Yeah. One famous person said this. I don't remember who that famous person was, but that person was like, bro, if something doesn't go my way, if something doesn't work out, I'll allow myself like 2 or 5 minutes or a day to sulk about it. Next day I'm like, bro, it's done. Now I need to move on. Correct, That is detachment. Detachment, it's, I mean, बोलते हैं ना लोग कि भाई किसी भी चीज से attach ही मत रहो, but for humans it's not possible, bro. Because there are so many things around us affecting us. Girlfriend, family, relationship, money, everything. So if things don't go your way, allow yourself to be sad. Allow yourself to feel like shit. But to get out of it, to be like, bro, एक दिन हो गया, मैंने जो भी मैंने अपने आप को victim card play कर लिया, now I need to move on with life. That is what detachment for me is. To be attached for something, but for a small period of time. If things go your way, everything is working out. आज मेरा बहुत बड़ा deal हुआ, I'm happy for a day. Next day I'm like, okay, next deal. Yeah. Hit me with the harshest reality truth. There is a high chance you have bought the clothes you are going to die in. भाई फैशन वाला बंदा अच्छे कपड़ों में मरना चाहिए. आज तो गाड़ी तू ही चला रहा, हमेशा तू ही चला गया. देख लेना भाई, अगर यही कपड़े निकले मैं अभी फेंक देता हूँ निकाल के. But I don't know what to say. I mean, it is true, because see, someday the clothes that you will die in, it might be hospital का clothes as well, जो तुम खरीदते नहीं हो, but तुम उसके लिए अच्छा खासा बिल भरते हो. वो तुमको पहनाया जाता है. But like again, it's like a road accident or like a heart attack or anything of that shit. So मतलब I don't know what to say in this, because but मतलब ऐसा ही नहीं कि बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है इस स्टेटमेंट से, but I feel कि it's again like a good thing that we never noticed. कि तू कभी ऐसा सोचेगा कि मैं इसमें भी मर सकता हूँ, मैं उसमें भी मर सकता हूँ. मेरे लिए ऐसा है कि मेरे को कभी नहाते समय नहीं मरना. तो मैं नंगा पड़ा हूँ, मेरे को कौन उठा के लेके जाएगा? मेरा भाई तो आगे बोलेगा पहले इसको कपड़े पहनाओ फिर जाके उठाते हैं इसको. ये क्या ऐसे नंगा पड़ा है बाथरूम में, डेढ़ सा साला. साबुन इधर लगा और गिर गया. मतलब तेरा भाई देखा नंगा जाते आते भी डिसअपॉइंट करके. It might be the best way to die or the worst way to die while having sex. It's like, I don't know. I'm like, you're doing a good deed and dying like fuck yeah. Or else you're like everything will be revealed. जैसे तूने बोला कि that position is awkward. You're just whatever on top or sleeping and then you're just dead. But that will be awkward for your partner later on. Yeah, I mean, तू तो मर गया. And then everyone will be like, ये जो बंदी है ना, ये सही नहीं है, ये मार दिया हमारे लौंडे को. Banging sex, bro, quite literally. But like, do you know this actor Matthew McConaughey? Yeah. So his parents died like that. So his dad died like that. His dad died while having sex. Died while having sex. Yeah. It's a fact. My man, bro. Inspiration है उसका बाप. On that note, thank you for watching. Thank you. Our episode. Again, subscribe to our channel. We'll come up with more segments like this. Yes. We'll hit some deep shit and some random ass shit. And we'll see you. Like this. It'll be a roller coaster as usual. And any feedback always welcome. मैं तो हमेशा बोलता हूँ, please comment कर लो, या तो हम दोनों में से किसी को DM कर लो, या तो impostors को DM कर लो. We are always here to listen. Impostors को DM करो तो इसको ही कर रहे हो, मैं तो वो account खोलता ही. On that note, I'll see you guys. We'll see you guys next Sunday. Yes, see you. Bye.